I have switched on recording, okay, so that I can give you later if possible. ठीक है, that is other reason. You can also record if you have the facility. Okay, let me take one more problem. Suppose 2 3 4 can start 8. just recording. You can maybe repeat it or do a same example. I'm So, taking different the examples. Yeah, I'm taking different examples. Okay, and probably for each model, I'll try to do at least two examples. Probably sometimes three or more also. Okay. So let me take one more example. Say 2348 into 9999. Okay. So in this problem, again, it is looking similar to the previous problem. One of the number is containing all nines. Another number is some random number. Okay. So मैं क्या करूँगा, आंसर अभी देख के बोलने के लिए कोशिश करूँगा. 2 3 4 7, ठीक है. बोले तो इसमें से मैं एक निकाल दिया, और फिर ये जो आंसर इधर आया, मैं इसको 9 9 9 9, इधर जो 9 9 9 9 है ना, इसमें से मैं इसको माइनस करके लिखूंगा. तो 9 माइनस 2 हो गया, ठीक है, 7. फिर 9 माइनस ये जो 3 है ना, इसको निकाले तो मेरे को आएगा 6. फिर 9 माइनस ये 4 करूँगा तो मेरे को आएगा 5. फिर 9 माइनस ये 7 करे तो मेरे को आएगा 2. ठीक है, तो ये मॉडल की प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा शायद. हेलो. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है, बिकॉज आई थिंक पवन अंडरस्टूड इट इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट सेल्फ. ओके, सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम अदर पीपल. Okay, so are they able to catch what I am trying to say is the question. Okay, so let me try to. Okay, okay, so let me come over here. Okay, let me give one more example to be confident about this kind of problems. Suppose मेरे पास now into suppose I have 1 4 9, ठीक है, 9, ठीक है, ओनली 149, ठीक है. आई हैव लाइक दिस, नाउ इंटू 149 है. तो यू शुड बी लिटिल बिट केयरफुल हियर. देखो, ये तो 3 डिजिट वाला है, ये तो 4 डिजिट वाला है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, अभी ये 149 में से एक कम करूँगा और मैं ये लिखूँगा 148, ठीक है. अभी थोड़ा हम ध्यान से रहना. देखो, हम 9 से, ठीक है, ये 4 9 से हम ये 148 को निकालना है. तो इसका मतलब क्या होता है, यू कैन थिंक दैट देयर इज ए जीरो हियर. ओके, सो आई एम नॉट, इवन इफ आई डोंट राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज ए जीरो एट दिस लोकेशन. सो दैट व्हाइल सबट्रैक्टिंग, ये 4 नंबर जैसा लग रहा है, ये भी 4 नंबर जैसा लग रहा है, एंड इट विल बिकम इजी फॉर यू टू राइट. तो इन दैट वे 9 माइनस 0, ओके, इफ यू डू इट विल गिव यू 9 हियर, ठीक है. तो फिर 9 माइनस 1 है ना, तो ये बनेगा 8. फिर ऐसे ही 9 माइनस 4 करे तो 5. फिर 9 माइनस 8 करे तो आपको आएगा 1, ठीक है. सो नाउ दिस जीरो यू नीड नॉट कीप हियर. ओके, so you should be careful because many people may do a mistake something like this. They may write like this 148, यहाँ तक तो they may write correctly. उसके बाद जनरली they may be wondering, अरे अभी क्या करना है. तो just like this they may do 9 minus 1 directly, ठीक है. 9 minus 1 if they do they'll write 8. Then 9 minus 4 they will write 5. Then 9 minus 8 they may write 1. फिर उसके बाद और एक 9 बच गया ना, तो सिंपली they may write it as 9 here probably, ठीक है. वो गलती हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा, ठीक है. Okay, so you should be careful about these kind of things, ठीक है, especially when the number of digits here and when the number of digits here are different. I have seen some more people, मैं ऐसे भी लोगों को देखा था जो बाय हार्ट करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव ए क्वेश्चन लाइक दिस नाउ, सपोज आई आस्क द क्वेश्चन 125 इंटू नाउ, तो इसको करो बोले तो आई हैव सीन सम पीपल, वो लोग क्या किया, ये जो प्रॉब्लम में दिया ना, ये प्रॉब्लम में मैं क्या किया, समझो मैं पहले ये प्रॉब्लम बताया और इमीडिएटली तुरंत उसके बाद में ये प्रॉब्लम दिया, समझो, ठीक है, ठीक है. तो सम पीपल वर ट्राइंग टू राइट लाइक दिस. इधर मैं क्या बोला था, इसमें से एक कम करो बोला ना, सो 126. So then some people who by heart who don't understand the concept properly, they may starting like this. चलो ये तो फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड नंबर, तो इधर भी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, तो सेकंड नंबर से एक कम करके 998 लिखना शुरू करते हैं, ठीक है. बिकॉज दे अंडरस्टूड, दे बाय हार्टेड एज इफ इधर सेकंड नंबर जो लग रहा है उसमें से मैं एक कम कर दिया.
तो इधर भी जब दूसरा नंबर दिखेगा उसमें से -1 कर देगा, ठीक है, एंड देन दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग, व्हिच इज आल्सो रॉन्ग। इट इज नॉट दैट वेदर दिस इज नंबर इज फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। ओके, क्या देखना है, हम एक नंबर में पूरा 999 जैसा रहना है, दूसरा नंबर कुछ भी रहने दो, शायद वो भी 999 होगा, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। ओके, सो वन ऑफ द नंबर इज हैविंग ऑल 999 एंड अदर नंबर कैन बी एनीथिंग, देन तो जो दूसरा नंबर है, ठीक है, उसमें से एक कम करके लिखना। सो इन दिस प्रॉब्लम विल बिकम 998, ठीक है, 998, ठीक है, देन उसके बाद फिर 9 माइनस 9, सो बनेगा 0, फिर 9 माइनस 9, ये बनेगा और एक 0, देन 9 माइनस 8, तो बनेगा 8, like that. Okay, so now I think you understood this particular model, so we will go to a new model. Don't be in a hurry. Okay, so you can clearly see अभी 10 मिनट हो गया हमारा क्लास शुरू होके, 10 मिनट भी नहीं हुआ, ठीक है, सो अबाउट 9 मिनट्स में, अभी अबाउट 9 मिनट्स में आप एक तरीका सीख लिया। ओके, सो लेट अस नॉट बी इन हरी, वी स्टिल हैव 30 more minutes approximately, so I will try to teach at least 4-5 models more, ठीक है, so till now is there any problem? If there is any problem, यू पुट ए मैसेज हियर इन द मैसेजेस, ठीक है, ये चार्ट है ना, तो इधर आप मैसेज डालो, अदरवाइज यू स्विच ऑन योर माइक टेम्परली फॉर हाफ मिनट एंड टॉक टू मी नाउ। ओके, देन वी विल गो टू ए न्यू मॉडल, या otherwise I am assuming that you have understood. Even if you understood, you tell me yes, even if it is not understood, you please tell me no. Okay, I am expecting answer from all the people. Some person told okay clear sir, but what about other 3 people who are in the meeting? Okay, just please tell me yes or no, so that I will be going slowly or a bit faster. Okay, yeah, I'm expecting other people to also respond. Okay, just you tell me yes or no, that is that much. Okay, yeah, I'm waiting for other people to answer in this charts part. You can answer here in the charts, or you can just switch on your mic and tell me yes or no, or what is your exact problem if you are not understood. See, if you are participative, it will be good for you. Otherwise, it will be like time waste. Please understand. Okay. So I cannot insist and I cannot force you. Okay. So I presume that you have understood. Okay. So let us go to a new model. So I will put one line like this. Okay. Now see, let us see some problems. I am putting some questions. Just see, 14 into, okay, 14 into, okay, and 1 6. Okay. This is one model problem. Okay. I am putting another problem. Say 37 into 33. This is another problem. Okay, one more problem, let me put, say 82 into, okay, 82 into 88. Okay, another problem, and just one more problem, let me put, let me make it to the second page so that there won't be any problem. Just observe all these questions and tell me there is some kind of similarity among them. That is what I am trying to bring out to you. So one more problem, let me give, 43 into 47, ठीक है, चलो ये चारों प्रॉब्लम देख के अभी मेरे को बोलो, some kind of similarity is there in all these 4 problems. Can you tell me what is the similarity? Don't tell me all are 2 digit numbers. Okay, other than every number is a 2 digit number, tell me there is some kind of similarity in all the questions. Question 1 is similar to question 2 in some sense, and question 2 is similar to question 3 in some sense, like that. Okay, all the 4 are related in some sense. Can any one of you tell? Please write on a paper, then it will be clear for you. See, I am writing horizontally. I am writing as 14 into 16 in a horizontal way. Probably you can write vertically 14, below 14 you can write into 16, like the way we write on a paper generally, especially when you are in childhood. Okay, you can write in a vertical fashion. Okay, then no, because the writing style also will give you some hints sometimes. That is why I am asking. Here in typing, horizontal way of typing is easy, so I'm typing in horizontal way. But when you write down with hand on a paper in vertical fashion, 14 on the top, 16 on the at the bottom, 37 on the top, 33 at the bottom, you will try to understand the logic or the connectivity in a proper way. Okay, can anyone tell now what is the oh, you are so someone is telling the difference is 2464 between the digits. No, okay. Can you tell me? Yes, someone is responding, but I am worried. Only one person is responding all the time. Okay. Other people also try to participate. There are just a few people in this, right? Okay. So okay, so okay. Now let me tell you. See the tens place. Here it is one, and here also tens place is one. Okay. Now tens place is thin here. Tens place is thin here. Okay, similarly tens place is odd, tens place is odd, that means the tens place is same in but if you take a particular problem, in that particular problem tens place is same. Okay, that is one thing you have to identify.
उसके अलावा यू ऑल्सो सी द यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस कैसा है, यूनिट्स प्लेस में इधर 4 है, इधर 6 है, ठीक है। तो 4 प्लस 6 जोड़े तो 10 आएगा। सिमिलरली इधर देखो, इधर 7 है और इधर 3 है, तो इधर यूनिट्स प्लेस जोड़े तो आपको इधर भी 10 आएगा। फिर इधर देखो 2 है और इधर 8 है, सो यूनिट्स प्लेस को जोड़े तो आपको 10 आ रहा है। टेंस प्लेस देखे तो वो बिल्कुल सेम है एंड ऑल आर डबल डिजिट नंबर वाला। सो यू अंडरस्टूड। सो अंडर दीज कंडीशंस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो देन देर इज वन easy method of doing the problem which I will teach you now. Okay, so you understood the conditions. So first the conditions are important. Okay, okay, so did you understand the conditions? Okay, now let me tell you how to write the answer. So देखो, अभी ये जो फर्स्ट टेंस प्लेस का डिजिट है ना, ये टेंस प्लेस का डिजिट एक दिख रहा है ना। ओके, यू टेक दैट एंड देन आफ्टर वन जनरली व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। सो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2 होता है। सो यू मल्टीप्लाई दिस 1 विथ इट्स नेक्स्ट नंबर विच इज 2। So this 1 into its next integer that is 2. So answer is 2. So you write here 2. Okay. नेक्स्ट क्या करो, ये यूनिट्स प्लेस 4 है, ये यूनिट्स प्लेस 6 है। सो जस्ट मल्टीप्लाई देम। सो 4 इंटू 6, सो वो बनेगा 2 4, 2 4 बन जाएगा। चलो आपको समझ में आया ना। ये 2 कहाँ से आया बोले तो इधर जो टेंस प्लेस में 1 है वो ले लो, उसको उसका नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करो। सो 1 इंटू उसका नेक्स्ट इंटीजर 2 होता है, 1 इंटू 2 2। सो वो 2 में इधर लिखा। फिर उसके बाद इधर ये 4 है और इधर ये 6 है, 4 इंटू 6 24 बनेगा, वो 24 में इधर लिख लिया। सेम मॉडल देखो, अभी ये 3 है ना, तो ये 3 इंटू 3 का नेक्स्ट इंटीजर लिखो। 3 इंटू 3 का नेक्स्ट इंटीजर बोले तो 4 होगा, 3 इंटू 4 होगा 12। तो Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, I mean, remaining may you can ask others to answer. हेलो, हाँ या Remaining example, यस प्लीज सजेस्ट मी। यस यस यू आर गिविंग सजेशन, आई होप। या प्लीज टेल। anyone voluntarily can they answer the answers? That is what I am saying. See, now when I ask them whether they understood, they are sitting dumb. Then what can I do? They should have that kind of enthusiasm, right? I should not insist every time. See, I think all of you are at, I think you are not even students. You are more than student level. Okay, so you should have that enthusiasm to participate in the class. Okay, only one person is responding after all the time, and now one more person start answering over the mic. That's a good thing. So I'm expecting other people also to tell the answers. Okay, it's not like a one-man show. Okay, then that can that I From sir, only like there are more people they can on their mic and they can speak. yeah, that's what I'm saying. When they have to answer, see, please understand other participants. Whenever you want to answer, you switch on your mic to tell the answer, and then please switch off your mic. Okay, that is possible. Yeah, so the 21. So yes, next who is that? I don't know. 21. Very good. Okay. So yeah, right. Good. So I think I should give some gifts for who is telling correct answers or what? Okay. 72, 16. So So it yes, yes, good, good. nine. Participation, yes. Because if you are participating like that, it will give encouragement for us also, and we also will feel like teaching more and more good things. ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये 8 है ना, so 8 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर होगा 9, so 8 9 जा 72 बनेगा, so 72। देन उसके बाद 2 इंटू 8, so कितना होता, या व्हाट इज आंसर नाउ, व्हाट इज 16. गुड। ओके, ओके, टेल दिस फाइनल वन। या सो नाउ व्हाट इज आंसर फॉर दिस? या आई एम एक्सपेक्टिंग 2021. 20. हाँ, 2021. Now we are in April only. 2021 will come after a few months. Okay, let us wait for that. Okay, अभी 2020 में है हम। चलो, very good. So I will give one final question based on the same model. Okay, now let us see 41 into 41 into 49. Okay, so just tell me this final thing. If you tell me this correct answer, then we can go to the next model. Yeah, please tell. Yeah, बताओ। Maybe they don't apply, I guess. Yeah, please tell the answer. 2009. 20 09. ये 09 कहाँ से लाया भैया? सी, पहले 20 तो मेरे को समझ में आया, बिकॉज ये 4 है तो 4 इंटू उसका नेक्स्ट नंबर 4 इंटू 5 20 बन गया। वेरी गुड। ओके, चलो उसके बाद 1 इंटू 9 इज देयर, सो सम पीपल में राइट 1 इंटू 9 इक्वल टू 9, बट ऐसा लिखे तो ये इतना छोटू आंसर, बहुत छोटा आंसर आया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो मालूम पड़ता है ये गलती है। Okay, so you have to apply some amount of common sense. 1 into 9 is 9,
But when you are multiplying this one single digit number and another single digit number, the way you have to express your answer is a double digit number. So your answer you have to express in the form of double digit number, so you express it as 09. अगर आप इधर जीरो लिखना भूल गया तो आपका टीचर आपको लगाएगा बड़ा जीरो इसका पूरा का, ठीक है। इसको पूरे को टीचर एक सर्किल मारेगा, जीरो मार देगा, ठीक है। जीरो आंसर, जीरो मार्क्स आएगा, ठीक है ना। सो यू शुड बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस, यू विल अंडरस्टैंड whether to put a zero here or not. Okay, so that's it. So you understood this model of problems, very good. So we will proceed to the third model. So what I will do, I will simply put a dash 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 kind of thing. We will go to next page so that there won't be any confusion. Okay. Okay. Okay, so now you keep concentrating. I am giving a different set of questions. Okay, chalo 41 into 61, that is one question. दूसरा क्वेश्चन है 53 into, okay, 53 into 53. Next, let me put say 74 into 76. Okay, so among these three questions there is some kind of similarity. Can anyone tell? Just a minute, let me make a modification. This is 34. Okay, now you tell me, among these three questions there is some kind of similarity. Can anyone tell? Hello. I mean, in its place, both numbers are same. Yes, in this case it is slightly reverse of the previous case. Okay, अभी ये देखें तो आपको यूनिट्स प्लेस कॉमन लग रहा है, एक एक तीन तीन चार चार, ठीक है। तीन तीन देखो, तीन तीन, फिर इधर चार चार लग रहा है, एंड देन टेंस प्लेस आप ऐड करो, यू शुड गेट 10। देखो 6 + 4 10, फिर इधर 5 + 5 10, फिर इधर 3 + 7 10. Okay, so this looks similar to the previous model, just in reverse way. Okay, but that doesn't mean the answer will also be in a reverse way. Okay, so just be careful, don't simply write the answer which you got in the previous model in a reverse order. That will not be the answer here. Okay, so how to do this kind of problems, just be careful. I'm telling you the model, a very easy method is there. See here, I hope you are writing them in a vertical fashion. Okay, I hope you're writing in a vertical fashion, I mean on the paper you are writing, so I think it will be better for you to write in this way. Okay, so that it will be very easy to understand also. Okay, yeah, if you write in this fashion, okay, if you write in this fashion, what you have to do, just observe the mouse. Okay, now ये जो चार है ना, 4 into 6, this 4 into this 6, it will be 24, ठीक है। this 4 into this 6, 24 plus this one, so vertically you come down, you multiply them. Okay, 24 प्लस हॉरिजॉन्टली इसको ऐड करो +1, सो 25. सो आप लिखना है इधर 25, फिर उसके बाद वर्टिकली दिस वन इंटू दिस वन. ओके ओके, सो 1 into 1 1, बट 1 into 1 1, बट दैट वन हाउ वी विल राइट, वी विल नॉट डायरेक्टली राइट लाइक दिस. ये बहुत छोटू आंसर हो गया, क्या लिखूंगा, 01 लिखूंगा, समझ में आया, बस दैट इज योर आंसर नाउ. Okay, so just to try to understand once more, I will explain with the next problem so that the concept will become clear. Okay, let me explain for this. Say 74 into 34, let me rewrite in this way, 74 34. Now concentrate what I am doing, this 7 vertically multiply with this 3, so 7 into 3 21, ठीक है। 7 into 3, ठीक है, 21 21 हो गया, प्लस ये 4, ये जो बाजू वाला 4 है उसको प्लस करूंगा, सो 21 + 4 25 बन गया, सो 25 बन गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, दिस 4 into this 4 vertically, so 16 vertically, whenever you are coming you are multiplying, please remember. So 4 into 4 16, that is a double digit number, so directly write a double digit number, that's it, this is your answer. चलो समझ में आया, तो इसका आंसर बोलो जल्दी, तुरंत बोलने के लिए कोशिश करो. या आई एम एक्सपेक्टिंग 2809. क्या, 2809. हाँ हाँ, टू टू 2809. या, बिकॉज या प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो 5 है उसको ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 25 प्लस बाजू 3 को ऐड करना, सो 28 हो गया, 28 आ गया, फिर उसके बाद 3 into 3 9, सो दैट 9 आई एम राइटिंग एज 09. ओके, समझ में आया ना। सो ये आसान है, ये पूरा वेद गणित की चमत्कार है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस लेटर. हमारा जो पहले टाइम हम सोचा था वो तो टाइम हो गया, बट वी स्टार्टेड लिटिल लेट. इफ यू डोंट माइंड वी विल गो टू वन मोर मॉडल. ओके
Okay, so I hope you understood this model. You practice with some more numbers. Okay, and one more request I make is please try to teach these things today itself to someone else so that they will sit in your permanent memory. ओके, यू कैन इवन राइट पोस्ट कार्ड्स। अभी लॉकडाउन होने के बाद एक एक पोस्ट कार्ड में आप दो दो मॉडल की प्रॉब्लम लिख सकते हैं, दूसरों को भेज सकते हैं, ठीक है, और अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं वो भी, ठीक है। चलो दूसरे मॉडल देखेंगे। Now let us see something like, suppose you have a slightly bigger number like, now first case when we have seen उसमें एक नंबर पूरा 999 जैसा था। For example, you had 999 multiplied with 127 kind of thing. Okay, now the question is, what if एक नंबर पूरा 999 नहीं है, दूसरा कुछ है। ओके, so तब कैसा करेंगे? So what I will do, let me take that kind of model problems. Let me reduce the size, let me also remove the space. Okay, maybe not. Okay, okay, 1 minute, just I'm doing some adjustment so that it will become easy. Okay, don't add space. Yeah. Chalo, now we will see some other model problems. 997 multiplied by 995. Suppose we have numbers like this. So in these kind of problems what we will do is we will try to take some reference. Okay, both the numbers are close to 1000, right? So if both the numbers are close to 1000, just you have to multiply this. This is the question. Okay, so just assume that you asked a question like this. Okay, so how do I solve this kind of problem? Okay, now I'm telling all the steps, so it may look a bit lengthy, but once you understand the process you can do in a shortcut way. Okay, so first be patient. Within 10 minutes we are going to complete this model of the problem also. Okay, if you have any appointment you can log out from here and you can give me feedback afterwards. Okay, it is up to you. I will try to continue for about 10-15 minutes more maximum. Definitely by 10:30 we will close it. Okay, and even before that if you want to go, please you can log out. Okay, because you might have appointments. Okay, now this model let us complete. So when you are given a question like this, when you are identifying that both are very close to 1000 and both are less than 1000, what I will do is I'm writing all the steps so it may look little bit bigger, but later on I will tell some shortcut. I'm writing it as minus 003. Okay, so means it is 3 less than 1000. Here I am writing as minus 005. It is only for reference. In the exam you need not write all these steps. I will tell the way to write directly answer. Okay, now what I will do, but for understanding let us write all these steps. Okay, this is 3 less than 1000, so minus 003. This is 5 less than 1000, so minus 005. ठीक है, तो अभी क्या करो, do cross addition, means ये 997 minus 005. So if you do that you will get, okay, let me put, this is like your line. Okay, okay, so when you do cross addition, that means 997 minus 005, it will give you 992. Okay, so 992. You can also observe ये 995 minus this 003 करे तो भी आपको 992 ही आएगा. That means whether you are doing this kind of cross, just observe the mouse, when you are doing this with this or this with this, any diagonal, you are getting the same answer. So you apply your common sense in the exam. Which one is easy? Sometimes the main diagonal will be easy to do, sometimes the other diagonal will be easy to do. Okay, whichever is easy for you to do, you please do that way. Okay, so in this case both are almost almost similar. Okay, apart requiring things. So 9 into we got. उसके बाद क्या करना, you take this minus, you take this minus, minus into minus is plus. Okay, so whenever you have plus, no, you can directly write. Okay, so here what I'll do, initially I'll put 000. I'll tell a shortcut method later. Okay, I'm putting 000, then minus into minus will give you plus, so you will have a plus here. Then 3 into 5 will be 15, so 15 means double digit, but I'm writing it in the form of 3-digit number. Okay, okay, so when you add all of that, okay, so let me put, so you are going to get 992015. Okay, this is your final answer, but in the exam you need not write all these steps. Okay, so I will tell now a easy method of writing the direct answer. Okay, in the exam how you think, आप कैसा सोचना बोले तो, whenever you are seeing these two numbers 997 995 को आप देखते ना, you try to do in your mind itself, ये 997 1000 से 3 कम है, 3 कम है ना, वो 3 को आप 995 से निकालो एंड यू राइट योर 992 डायरेक्टली. अदरवाइज अनदर मेथड इज, पहले आप ये नंबर ले लो 995 है ना, ये 1000 से 5 कम है, तो आपके मन में ओ 5 कम है ना, वो 5 को आप ये 997 से निकालो, so it will become 992. So you write in your answer sheet directly 992. Okay, like that. Okay, directly you write this, you need not write all these middle steps. नेक्स्ट क्या करो, आपके मन में ही
ये 997 1000 से 3 कम है, 995 1000 से 5 कम है, वो भी कम है, ये भी कम है। इसका मतलब वो भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। व्हेनेवर आपको प्लस आता है ना, देन यू कैन डायरेक्टली राइट द अदर आंसर जस्ट बिसाइड दिस आंसर। ओके, जो 992 आपको आया ना, जस्ट उसके बाजू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं व्हेनेवर यू गेट दैट माइनस इंटू माइनस एज प्लस। ठीक है, बोल तो प्लस जब आ रहा है, देन ये 3 कम है तो 3, ये 5 कम है तो ये 5, सो वो 3 इंटू ये 5 15, दैट 15 आप लिखना है। बट रिमेंबर वी आर डूइंग रेफरेंस एज 1000, दिस प्रॉब्लम वी आर डूइंग विद रेफरेंस टू 1000। सो जो 15 आया उसको आपको 3 डिजिट के रूप में लिखना, 1000 आए तो। इफ इट इज रेफरेंस इज 100, देन यू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ डबल डिजिट नंबर, गॉट द पॉइंट। सो ये जो 15 आया आप उसको 3 डिजिट के रूप में लिखना, सो आपको 015 लिखना पड़ेगा। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल सो दैट इट विल मेक द थिंग्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो जस्ट beside this let me put one more problem, say 95, okay, below that, okay, I'm giving one more multiplication, say 97. Let us take this problem. Okay, now for this problem let us try to write the answer directly. Okay, so देखो मैं क्या करूंगा, ये जब देखते देखते ही मेरे को मालूम पड़ गया दोनों 100 से कम है और 100 के पास पास में है, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 5, तो माइनस 5 है ना, दैट माइनस 5 को मैं इधर से मैनिपुलेट करूंगा। बोले तो ये 5 कम है, ये जो 5 कम है वो 5 को मैं इधर से निकालूंगा, सो मेरे को आएगा 92। सो हियर आई विल राइट नाउ, हियर आई विल नाउ राइट 92। ओके, सो दैट कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन आई एम डूइंग माइंड। अदरवाइज अनदर मेथड इज, इसको देखो ये 3 कम है तो वो 3 को आप इसमें से निकालो, सो 95 माइनस 3 विल आल्सो गिव यू 92, एनीथिंग इज ओके, व्हिचएवर यू फील इज इजी यू डू। समटाइम्स ये 95 5 कम है, वो 5 को 97 से निकालना कभी-कभी आसान होता है, कभी-कभी ऐसा होता है ये 97 3 कम है, वो 3 को इसमें से निकालना आसान होता है। सो जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम सो यू विल अंडरस्टैंड व्हिच वन इज ईजी immediately and accordingly you do it, and anyhow both will give you same answer. Okay, only thing is whether you are doing fast or not is the question, एंड वेदर यू आर डूइंग द करेक्टली और नॉट इज द क्वेश्चन। ओके, चलो इधर तक आया। फिर उसके बाद क्या करना नेक्स्ट स्टेप में, ये 5 कम है, ये 3 कम है, तो कम कम बोले तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। सो व्हेन इट इज प्लस यू नीड नॉट वरी, यू कैन सिंपली डायरेक्टली राइट द आंसर बिसाइड दिस। देन नेक्स्ट थिंग इज ये 5 कम है, ये 7 3 कम है, सो 5 कम 3 कम, सो 5 इंटू 3 15। सो 15 को आप 2 डिजिट के रूप में लिखना, ऑलरेडी 15 इटसेल्फ इज 2 डिजिट वाला, सो यू सिंपली राइट 15, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। Okay, so I'm expecting answers from you. Did you understand up to here? Hello, did you understand up to here? Please tell me yes or no. Yes, ठीक है, okay, चलो। Okay, so okay, so this model you understood, but let me give you some intricacies. I will give you one more model in the same thing. I will give you one more question so that you will never miss out anything. Okay, then we will try to stop here. Okay, so let me take one more example of the same kind. Purposefully I'm taking a slightly a number which is slightly away, 85. Okay, 85 into, okay, 85 into say 92. Okay, so I have taken numbers which are slightly away from 100, but still you can take the reference as 100 itself for them. Okay, let this not disturb you. Yes, so let us concentrate on these kind of numbers. This also you can do orally. Okay, you need not use a calculator. Just to see now वो कैसा करते हैं। ये 100 से 15 कम है, ओके, एंड ये 100 से 8 कम है। नाउ द बेस्ट मेथड इज विच इज क्लोज टू 100, यू फर्स्ट टेक दैट नंबर। ठीक है, ये 100 से 8 कम है ना, तो 8 को 85 से माइनस कर दो, दैट विल बी इजी टू डू कंपेरेटिवली। ओके, सो 92 8 कम है तो वो 8 को 85 से माइनस कर दो, सो इट विल बिकम व्हाट, 85 माइनस 8, सो इट विल बिकम 77। ठीक है, 85 माइनस 8 कर रहे हम, ठीक है, 77 आया। देन उसके बाद हम क्या करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। नाउ दिस इज माइनस 15 एंड दिस इज माइनस 8, सो फिर भी माइनस इंटू माइनस प्लस है। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस है, सो व्हेनेवर यू हैव प्लस यू कैन डायरेक्टली राइट हियर विथ हार्ट। ओके, या वी विल ट्राई टू राइट इट। ओके, नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, नाउ ये 15 कम है, ये 8 कम है, सो 15 इंटू 8 विल गिव यू 120। Okay, this is 15 less and this is 8 less, so 15 into 8 will give you 120.
So 120 you got, but you have to write your answer in terms of double digit number only. But you got a triple digit number. You should be careful. So because you got 120, you cannot write directly like this 120. Please understand, this is important. You got 120, and I told if whenever you got plus minus into minus plus जैसा आया आप ऐसा बाजू लिख सकते हैं. But if you simply write like this is a very big number and you know that this number cannot come. Just because even if you have 100 into 100, you'll get only 10,000. How can you get a big number like this 77,120? Not possible. So you should understand how to write the triple digit number in terms of double digit number. Okay. So थोड़ा common sense आप apply करें तो आपको मालूम पड़ता है. Whenever you have something surplus, अगर you are doing agriculture, आपका खेती में ज़्यादा फसल आया, you have to give something to your neighbor. In the same way, हमारे पास अभी 3 डिजिट नंबर बाकी है आया, लेकिन हमको 2 डिजिट नंबर बस है, तो हम क्या करेंगे, ये तीसरा डिजिट वाला को हम बाजूगर में दे देंगे, बाजूगर वाले को इसको दे देंगे. सो ये 1 को हम क्या करेंगे, ये 7 को दे देंगे, ये बन जाएगा 8. प्लीज अंडरस्टैंड. होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक. गॉट दिस पॉइंट? Just tell me yes or no. Yes? No, I don't know whether you understood. You tell me once more so that I will be okay. Yes, okay. ठीक है. Okay, thanks a lot. I have taken your time and thanks for your patience. अगर आपको ऐसा सुनना पसंद है तो I would like to continue. This is not made for any one single person. The main intention is to share the knowledge. Okay. And probably you will be using it in at some point of time. As a teacher, you can teach these things in your class. Maybe you may be teaching some subject. In the middle, you may get some 1 or 2 minutes time. In that 1-2 minutes of time, you can teach this to your students. They will also feel happy. ठीक है. Even if you are teaching radar, suddenly you are teaching maths, they feel happy like this. ठीक है. धन्यवाद सुनने के लिए. अभी मैं साइन आउट करूँगा. ठीक है. Based on the interest of the audience, I can even conduct some more classes like this. I just request you to continue practicing and try to teach today itself to someone else. Okay, and maybe once in a month again you can just refresh your things. Once you teach, you cannot forget. These are so simple things, and these are from Vedic Maths. I have not told anything. You have more videos in internet, not made by me, but some eminent person. There is one person called Remella Avadhani Garu. I'm just typing his name here. You can search his videos. Remella Avadhani. Okay, you can type this name. Lot of videos are there. If the program came in Puja TV also, you may type like this internet and you can get lot of videos. They are available in Telugu also. My request is, if you are a Telugu person, please see the Telugu videos. Okay, like that. Otherwise, you can see the English version also. Okay, but try to see in your mother tongue. Okay, that will give you a lot of confidence and also easy way of understanding it. Okay, ठीक है. धन्यवाद. Finally, if you have anything, you just put me a message. You can switch on your mic and tell me. Otherwise, I am logging out in 1 or 2 minutes. ठीक है. सर ये तो क्लियर हुआ, किसी को बता देंगे तो वो क्लियरिटी आ जाएगा. हाँ, yeah, और that's what. See, once you teach, you will get more clear. That's always there. Okay, teacher will be always in a beneficial position. जो जब आप पढ़ेगा ना, आपका clarity of thought आ जाएगा. Because when you are trained to teach, वो कुछ doubt पूछेगा and then you will start thinking, अरे ये क्या doubt पूछा, ये क्या करूँ बोल के. Yeah, that is really generally it happens. A teacher can learn lot of things from the students by the doubts they ask. और ऐसा भी कोई भी हमारे रिगार्डिंग कोई भी चीजें वो आप शेयर करते रहिएगा. हम Yeah, देखेंगे. yeah, we can discuss subject. I am also thinking of doing some machine learning kind of programs. If someone we can even do. I can teach some basic machine learning also. Vikram sir, who is the other one? Other person is see, there are two people here now. One person is working as a faculty in HLP Engineering College, Nageswarovsky, and the other person is Pawan. Pawan, he is a student. He was a student in Hindustan University. Okay. So he was your student. Yeah, he was like I just worked for 1 month, no, so he was there for. He's a student or in faculty? No, he's a student. Okay, now just he wrote GATE exam this year and he got I think 45 marks, something like 45 marks. Instrumentation department. Okay. He's in Haryana. Okay. Okay. Very nice meeting you, Mr. Pawan. Okay, yeah. So based on the interest of the audience, next time we can do even machine learning basics of machine learning. Vikram sir, one more suggestion. This you can, I think you have anyway documented it on Word, so you can mail them. Whoever has joined, you can Yes, mail them. yeah, that I will do. Yeah, that is the reason why I have typed. Yeah, I will send the document to the people who mailed me. So
special they have any doubt, they can just look it and Yes, yes, surely. recall it. Yes, if you know what will I do keeping in my computer, I will mail to them. Okay, thanks a lot for the support. Right. Nagendra Yeah, sir, yeah. you are teaching which subject, sir? I currently taught neural networks. Okay, okay. Anyway, nice to meet you, and hope you Okay, will. okay. Now actually, there is one more class scheduled now, so I want to join it actually on some simulation and. Okay, so I'm Which signing topic? out because of that. Okay, right.